Hello class, welcome back to your computer classes. And class, in the last video we have completed our chapter 6. In our last video we have already completed our chapter 6. Now it's our turn to do the exercise question. So what we will do today? Today we will solve the exercise question, and also along with solving the exercise question we will also do a quick revision of the chapter. So in this chapter we have learned a lot of things like adding a gadget, removing a gadget, changing themes, and changing color theme, and changing background paper and wallpaper and screensaver. So a lot of things we have done. Now it's our turn to do the exercise question. So let us see. I know that the background image that appears on our desktop is called wallpaper. So what is it? This is a checklist. Here we have to tick the things that is right. जो भी चीज आप जिससे एग्री करते हो तो you have to tick them right. So the first question is, I know that the background image that appears on our desktop is called wallpaper. So is it true or false? So yes, this statement is right. We know now that the background image that appears on our desktop, we call it wallpaper. Next, I know that by changing the background we can make desktop more beautiful. So we know that by changing the background we can make our desktop more beautiful. So again this statement is also correct. Yes, changing the background, अच्छी photos, picture लगा के what we can do, we can make our desktop looks more beautiful. So this statement is also right. Next we are having, I know that the desktop theme is used to change the color scheme, font size and effect and other item present on it. So I know that the desktop theme is used to change the color schemes, font size and effect of desktop and other items present on it. So this statement is also correct. I know that a screensaver is an image that pops up on the computer when it is idle for a certain time. So yes, it's true. Whenever our computer become idle for a certain time, what happens? Screen setup. So screensaver will pop up. Next is, I know that a screensaver is so this is correct. I know that a gadget is a small program such as clock or calculator that performs a specific function. So it performs a specific function. So yes, this statement is also right, that gadget is a small program such as clock or calculator and they perform the specific function. वो क्या करते हैं? कोई एक specific function वो perform करते हैं. Okay. So this statement is right. Next we are having our exercise question. The background image that appear on your desktop is the background image. So what we call that background image that appears on our desktop? We call it wallpaper. That background image is known as wallpaper. मैम ने आपको करके भी दिखाया था ना, wallpaper change करके. So we call it
wallpaper. Next, an image that pop up on the screen when it is idle for some time is called. So, an image that pops up on the screen when it is idle for some time is called screensaver. We call that screensaver. When our computer screen become idle for some time, idle मतलब उस पे अभी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम उस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो आइडल हो जाएगा। आइडल होने के मतलब थोड़ी देर बाद उस पर स्क्रीन सेवर, जो भी हमने स्क्रीन सेवर लगाया होगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा, मतलब स्क्रीन पे सामने आ जाएगा। बैकग्राउंड पिक्चर कैन बी पोजिशन इन डैश वे। Now background pictures can be positioned in, so let us see how many ways it can be positioned. So we have read it, let us see. Yeah, see here, background picture can be positioned in 1, 2, 3, 4, 5. 5 ways. Background picture can be positioned in 5 ways. So our answer for this is 5. Background picture can be positioned for 5 ways. Okay, now next is dash is not part of default gadget. Dash is not part of default gadget. Clock, CPU meter or game? Tell me. So dash is not part of the default gadget, is answer will be game. Game is not a default gadget. Game you have to download from the प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, एंड गेम इज नॉट, गेम आपका डिफॉल्ट गैजेट नहीं होता बेटा। डिफॉल्ट गैजेट हम उनको बोलते हैं, या गैजेट्स हम उनको बोलते हैं जहां पे हम क्या काम करते हैं, जहां पे आप क्या करते हो, जो गैजेट्स वो होते हैं जो कि कोई स्पेसिफिक वर्क करते हैं। तो गेम से हम कोई, पहली बात तो कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं, प्लस वो गैजेट भी नहीं। गेम इज नॉट अ गैजेट। वन मोर थिंग, गेम इज नॉट अ small program also. Okay, now so let us revise it. Take the correct answer. The background image that appears on your desktop is wallpaper. The background image that appears on your desktop is, we call it wallpaper. Next is an image that pops up on the screen when it is idle for some time is screen saver. We call it screen saver. Next, background picture can be positioned in 5 ways. बैकग्राउंड पिक्चर को हम कितने तरीके से पोजीशन कर सकते हैं? वी कैन पोजीशन इट इन 5 ways. We can position it in 5 ways. Dash is not a part of default gadget. So which of the following is not a part of default gadget? Game. Game is not a part of default gadget. है ना?
So here we have completed tick the correct option. Now let us move toward the next question. Next question is T and F, that is true and false. So in next question we have to write true for T for the true and F for the false statement. Okay. Question number 1. You cannot change the background of the desktop. So you cannot. So is it true or false? So in this question it is written that we cannot change the background of the desktop. So can we or can we not? Tell me, can we or can we not change the background of the desktop? We can change the background of the desktop. So the given statement is false. Desktop का background हम change कर सकते हैं. Next is the tile option displays the image in the center of the desktop. Is it so? Let us see. The tile option represent it in center or where? This option display multiple copies of the image repeatedly so they can fit the entire desktop. So tile option do not represent any image in the center. टाइल ऑप्शन सेंटर में नहीं ले आता बेटा. सेंटर ऑप्शन क्या करता है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करता है. टाइल ऑप्शन कहाँ रखता है? टाइल ऑप्शन उसको टाइल ऑप्शन उसको मल्टीपल कॉपीज बना के पूरे डेस्कटॉप पे फिल करता है. So this option, the tile option displays the image of in the center. This option is also false. This option is false. Next is desktop theme is used to change the color scheme and font size. So yes, it is true. Desktop theme, we use desktop theme to change the color scheme and the font size. This is true. Desktop theme is used to change the color scheme and the font size. मैम ने बताया था ना कि with the help of desktop scheme we can with the help of desktop theme we can change the color and font, each and everything. Okay, so this statement is true. Next we are having screensaver is an image that pops up when the computer is idle for some time. So is it true? Yes, screensaver is an image that pop up when the computer is idle for some time. So it is true. जब computer थोड़े time के लिए idle हो जाता है, so what happens? Screensaver option क्या होता है? Activate हो जाता है, वो pop up हो जाता है. Okay, cool. Let us read. Okay, let us write true here. Next question. Screensaver is removed when you sit in front of the computer. Is it so? ऐसा होता है क्या कि जब हम कंप्यूटर के सामने बस बैठ जाते हैं तो स्क्रीन सेवर हट जाता है? ऐसा होता है क्या बेटा कि जब हम खाली कंप्यूटर के सामने बैठ गए और कंप्यूटर क्या हो गया? कंप्यूटर के सामने से स्क्रीन सेवर हट गया. इज इट सो? ऐसा होता है? नो, ऐसा नहीं होता है. स्क्रीन सेवर तब हटता है जब हम अपनी स्क्रीन पे कर्सर को मूव करते हैं. सो दिस option is false. Next is
A gadget is used to change the color of the desktop. Is it so? That gadget is used to A gadget is used to change the color of the desktop. False. This statement is also false. Gadget is not used to change the color of the desktop. गैजेट्स क्या होते हैं? गैजेट्स तो सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं, सिंपल सॉफ्टवेयर होते हैं, और इनका काम क्या होता है? गैजेट्स का सिंपल सा काम होता है कि सारे प्रोग्राम्स को, इनका कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है और वो करना ही इनका सिर्फ काम होता है. Okay. Now next is what we have just read, that a gadget is used to change the color of the desktop. Okay. Now write T for true and F for false statement. First, you cannot change the background of the desktop. So this statement is true or false? Tell me, this statement is true or false? Yeah, right. This statement is false. Next is the tile option displays the image in the center of the desktop. The tile option displays the image in the center of the desktop. No, this statement is also false because tile option is not used to display the image at the center. Center option is used to do so. Desktop theme is used to change desktop theme desktop theme is used to change the color scheme and the font size. True. Screensaver is an image that pops up when the computer is idle for some time. True. The screensaver is removed when you sit in front of the computer. So is this statement true? Screensaver is just got removed when you just sit in front of the computer. No, this statement is false. Now next is, a gadget is used to change the color of the desktop. False. A gadget is not used to change the color of the desktop. So we have done here, we have done true false also. Now it's our turn to do the question answer. Okay, now it's our turn to do the question answer. Okay, let us see. First is, what is desktop background? First question is, what is desktop background? So let us see what is desktop background. See, desktop background is the that picture that appears in front of us when we open our computer. See,
So a desktop background is used to make our computer screen more beautiful. And if we go by definition, a wallpaper or background is a digital image used as decorative background of a graphical user interface on the screen of a computer, smartphone or other electronic device. मतलब background is what? जैसे अब देखो मैम ने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कैसा रखा हुआ है, यहाँ पे देखो मैम ने इसका बैकग्राउंड पूरा रेड रखा हुआ है। तो क्या बैकग्राउंड इज व्हाट, कैसा हमारा डेस्कटॉप दिखेगा जब हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करेंगे, तो दैट उसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी टू पोजीशन ऑप्शंस ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन। क्या एक्सप्लेन करना है? टू पोजीशन ऑप्शंस। टू पोजीशन ऑप्शंस को हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। लेट अस डू। तो अभी हमने देखा ना टाइल ऑप्शन, सेंटर ऑप्शन के बारे में, फिल इन द ब्लैंक मैच द कॉलम में मैम ने बताया। नाउ इट्स अवर टर्न टू सी। देखो क्या है पोजीशन ऑप्शन, तो वी कैन एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द पोजीशन ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पे फिल ऑप्शन इज देयर, फिट ऑप्शन इज हियर, स्ट्रेच ऑप्शन इज हियर, टाइल ऑप्शन इज हियर एंड सेंटर ऑप्शन इज हियर। ठीक है, तो इनमें से एनी टू वी कैन एक्सप्लेन। So इनमें से what happen, what can be done, any two option we can explain. So we can explain first fill option. This option display a single copy of the image extended on all the side and keep the ratio and width or to hide the same. So it means that some part of the image will cut off. Yeah, we can write stretch also. This option display a single copy of the image extended on all the sides so it can fill the entire desktop. Now I mean to say कि you can choose any of the two options from the given. Picture position के कोई भी दो options लेके you can write your answer. Next is what is screensaver? What is screensaver? अब देखो a screensaver, let us see. A screensaver is an image that pops up on the computer when it is idle for a certain time. So what is a screensaver? A screensaver is an image that pops up on the computer when it is idle for certain time. Okay, so this is our answer number 3. Now let us move ahead. Okay, next is our application based question. While making a project on MS Word, the bell of lunch break rang and Akshay went to the canteen. On returning, he noticed that Rakshit is watching the project from his desktop. Advise Akshay how he can prevent such event in future. So what Akshay can do? आप बताओ what Akshay can do? So Akshay can put a password on his डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे अगर अक्षय एक पासवर्ड लगा देते हैं तो व्हाट विल हैपन, उनका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कोई उनके लैपटॉप में पीक नहीं कर सकेगा। Okay, great. So we have done up to here. Now we have done this chapter's exercise also. Now from this chapter I will teach you some of the things. जैसे पोजिशनिंग अ इमेज, पोजिशनिंग अ इमेज ऑल्दो हमने किया है, बट स्टिल टुडे ऑल्सो आई विल
make you revise that. So we will start from changing the desktop background. Let us see. So open the personalization window. Next, after opening the personalization window, what can be done? Click on the desktop background. After clicking the personalization window, what can be done? You can click on the desktop window. Next, click on the down arrow to of the picture location. चलो करके देखते हैं, ऐसे हमें नहीं समझ में आएगा. तो we will click here and let us search for control panel. First we will search for control. We have opened control panel, and from control panel we will go on appearance and personalization. Okay, great. Next, we will go on taskbar and navigation, and from here we will go on background. Background पे गए हम. Okay, so from here we can change the background. We will choose the picture. हम picture पे गए. अब देखो पिक्चर पे सपोज मैम ने ये वाली पिक्चर चूज कर ली. अब यहाँ पे वो पूछेंगे चूज. अब देखो मैम ने ये वाली पिक्चर चूज कर ली, तो चलो देखते हैं मैम की स्क्रीन कैसी दिख रही है. देखो मैम की स्क्रीन कैसी दिख रही है ना. दिख रही है ना हमको. नाउ व्हाट नेक्स्ट वी विल डू. अब हमें चाहिए कि इस इमेज को हम फिट करें, जिस तरह की आपकी बुक में लिखा है इसको फिट करने का. तो लेट अस ट्राई टू फिट दिस इमेज. Fit the picture. So we will again click on the taskbar and navigation, then background. After going on background, we will choose a fit. तो अभी ये fill पे है, मुझे चाहिए कि ये tile हो जाए. तो let us click on tile. अब देखते हैं मैम की स्क्रीन कैसी दिख रही है. मैम की स्क्रीन. रुको, let me choose any other picture. मैम को दूसरी पिक्चर चूज करने दीजिए. I have choose this picture now, and now I will click on tile option and see. देखो क्या हुआ. ये अजीब सा दिख रहा है ना. मेरे पूरे स्क्रीन पे एक ही पिक्चर नजर आ रही है ना. देखो ये कितना वियर्ड अजीब सा दिख रहा है ना. तो टाइल ऑप्शन में क्या होता है, देखो आपके फिल इन द ब्लैंक एंड मैच द कॉलम में भी सॉरी ट्रू फॉल्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस में भी कई जगह आपका टाइल ऑप्शन आया था. तो हाउ वी कैन टीच, how we can what will happen if we click on tile option. This will happen. हमारा पूरा डेस्कटॉप छोटे छोटे टाइल ऑप्शन से क्या हुआ है, फिल हो गया. हमारा पूरा डेस्कटॉप छोटे छोटे टाइल ऑप्शन से फिल हो गया है. नाउ लेट अस चेंज इट अगेन, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू चूज सेंटर. तो अभी मैम ने क्या किया, अभी मैम ने सेंटर चूज किया और साइड की इमेज के लिए मैंने ब्लू चूज कर लिया. ठीक है, नेवी ब्लू. ओके, अब देखो हमारी स्क्रीन कैसी दिख रही है. पूरा नेवी ब्लू है और सेंटर पे देखो हमारे ये इमेज है. जो हमारा स्क्रीन सेवर था वो सेंटर पे आ गया है. ओके, इतनी चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गई. ग्रेट. नेक्स्ट व्हाट